Hello students, how are you? I hope you are doing well. So welcome to an academy. This is Dr. Khalil Khan. आज के इस सेशन में हम देखेंगे a very important aspect of GATE journey, do's and don'ts for GATE aspirants. देखिए, do's and don'ts for GATE aspirants मतलब आपके गेट के प्रिपरेशन के दौरान what are the things that you should take care of and what are the things which you should not, जो चीज़ें आपको करनी है और जो ना करनी है, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी. मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स है, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर मुझे वो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ये ऐसा चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. सो इन दैट रिगार्ड मे बी आई वुड से ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा. जितना हो सके प्रिसाइज और क्रिस्प रखने की कोशिश करूँगा सो दैट शुड नॉट लीड टू मच ऑफ योर वेस्टेज ऑफ टाइम. तो एसेंशियली मैं बात करूंगा सेवरल पैरामीटर्स पर, जैसा नोट्स है, प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर है. ये मेरा दो फोकस रहेगा आज के सेशन में. आई मीन नोट्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के लिए कैसा वर्कआउट करें, रिवीजन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन होगा. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चीज सो डूज एंड डोंट्स फॉर गेट एस्पिरेंट्स. एंड बिफोर दैट, दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, and if you have not joined you can do so for all the benefits. Boys and girls, I would say the very first parameter is notes taking. Note taking, it is a must, mandatory है, compulsory. See, there are two things. अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो you cannot do revision, right? अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा. So it is very essential that you make your notes, and there are two approaches. The best possible thing is make your own notes, boys and girls. Make your own notes. This is ideal strategy, ideal one. अपने खुद ही के नोट्स बनाने से आपको ये होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो यू कैन रिकलेक्ट द सेम थिंग, यू कैन रिकलेक्ट फास्ट. वरना अगर आप दूसरों के नोट्स देखोगे तो शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पता नहीं लगेगा कि ठीक है ये क्या स्टेटमेंट आई कैन नॉट रिमेंबर नाउ. सो इफ यू मेक योर ओन नोट्स, इफ यू हैव योर ओन नोट्स, दैट विल फैसिलिटेट इजी रिविजन. रिविजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. अब रही बात सर कैसे बनाए नोट्स. Suppose for example if you are studying on your own without any enrollment in any coaching institute, then I would say the notes making is through textbooks. Important textbooks है हर सब्जेक्ट के, आप लीजिएगा and then you draft your own notes, prepare your own notes. लॉन्ग नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, particularly if you are preparing for long term. मतलब अगर आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम है तो अपने ओन नोट्स बनाना ज़रूरी है. लॉन्ग नोट्स बनाइए, डिटेल नोट्स बनाइए. कुछ रेफरेंसेस अगर चाहो तो प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स है, सीनियर्स है, उनके रेफरेंसेस देख के फिर आप अपने स्टाइल से जिस तरीके से आपको समझने में आसानी होती है उस तरीके से बनाइए नोट्स. पैराग्राफ मत लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए. लाइक फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं, जैसा कि मैं पढ़ाता हूं सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक चैप्टर है सीपीयू शेड्यूलिंग. अगर आपको सीपीयू शेड्यूलिंग के नोट्स बनाना हो तो फर्स्ट आप मेंशन करना होगा व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग. नेक्स्ट, नीड फॉर शेड्यूलिंग, क्या क्या नीड है, पॉइंट वाइज लिखिएगा. थर्ड, टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्लासिफिकेशन, प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, ये नोट्स लिखिएगा. फिर शेड्यूलिंग टेक्निक्स, एल्गोरिथम्स, नंबर 1 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है. फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू से, लाइक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन केस इफ देयर इज अ टाई बिटवीन प्रोसेसेस, क्या होगा. फिर एडवांटेजेस ऑफ एफसीएफएस, ड्रॉबैक्स ऑफ एफसीएफएस, इस तरीके से बनाइए. ये हो गया एफसीएफएस. फिर सेकंड शेड्यूलिंग टेक्निक, इसी तरह रिपीट कीजिएगा. दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. यू डोंट नीड एनी पर्टिकुलर. हाँ, कोई एक स्पेशल प्रॉब्लम है, आपको बहुत अच्छा लगा सॉल्व करने का, ठीक है, तो आप उसे देख, आई मीन यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट, यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट. यू नीड नॉट कॉपी ऑल द प्रॉब्लम्स. हाँ, अगर आप कोई for example you got enrolled into some institution and taking coaching from there, and then follow the lectures of the professor, educator, उनके प्रॉब्लम्स आप जो है सो अपने नोटबुक में लिख सकते हो. that is it is making your own notes. That is very very important. Second aspect,
If you don't want to, if you believe that you don't have, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि sir I don't have time, I'm working, I'm studying, I don't have time to make full notes of my own. I mean the other thing is, as I said, suppose if you are preparing on your own, कोई सीनियर जो गेट में अच्छा रैंक लाया है, राइट, टॉपर है, उनके नोट्स आप ले लीजिएगा, एंड देन यू टेक ए प्रिंट ऑफ इट, एंड देन इन दैट प्रिंट यू कैन पुट योर ओन एनोटेशंस. टेक ए प्रिंट आउट एंड पुट योर ओन एनोटेशंस, अपने ओन कमेंट्स डालिए उसमें. पहले अच्छा तरह स्टडी कीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड देन पुट योर ओन कमेंट्स, पुट योर ओन नोट्स. या अगर आप सब्सक्राइब हो to some institution like an academy, for example, you can take PDFs of our notes, class notes, and then you can add your own annotations. लेकिन फिर भी, so this is the second best, the next best. First best is own notes. Next best, for any reason, if you are unable to do so, then you can follow this. You can follow this. Add your own comments so that you can recollect fast. You can recollect fast. That is what is the basic ideology of making notes. So बच्चों, notes prepare करना काफी ज्यादा important है. Long notes होने के बाद short notes, या simultaneously आप prepare कर सकते हो, short notes भी prepare कर सकते हो along with long notes. Short notes will help you in different iterations of revision. First revision आप long note से करना होगा, second revision, third revision, fourth revision जो है short note से कर सकते हो. That is the advantage of short notes. Short notes के लिए मैं ये कहूँगा कि if you can take short notes already prepared by some students, and if you are happy and satisfied with it, then go ahead with it. That's okay. That's okay. ठीक है. तो long notes for long time preparation is compulsory, mandatory, either your own or maybe through annotations on the other notes. चलिए next. अब next बात रही important, after completing the subject, generally we say that you should go for practicing. तो प्रैक्टिस टेस्ट से पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि यू शुड गो फॉर PYQs. सॉल्व PYQs. विदाउट PYQs नेवर एवर थिंक ऑफ अटेम्प्टिंग GATE. सर कितने साल के PYQs सॉल्व करें? PYQs you can solve minimum 20 to 25 years for computer science and IT. 20 to 25 years of PYQs you should solve. तो बेटा एक बार सॉल्व कर लीजिएगा या एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो. सम स्टूडेंट्स विल स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट immediately after the topic is over, but I won't recommend. You can do it. I mean strategies can be different. No strategy is ideal or optimal. तो आप अपनी own strategy follow करो. If you are comfortable with that, go ahead with it. लेकिन generally मेरा recommendation ये रहता है कि you can basically start practicing or taking a practice test or test series only after the PYQs are over, after the total subject is over. वरना क्या होगा, some questions will have linkage to other topics. Like for example CPU scheduling है, वहां पे कुछ मेमोरी मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है. मेमोरी मैनेजमेंट है, वहां पे कोई फाइल सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है. तो लिंकेज रहने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट, after completing the subject, then only you start practice test, then only you start PYQs. Okay. इंपॉर्टेंट PYQs जो आपको लग रहा है कि क्रिटिकल है, यू मेक ए नोट ऑफ दैट इन योर नोट्स. और PYQs जब सॉल्व करो तो मैं तो बोलूंगा एक सेपरेट रजिस्टर रख के आप उसमें सॉल्व कीजिएगा. दैट इज गुड, सो दैट लेटर ऑन क्विक रिवीजन में आप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आप एक बार रिवाइज कर सकते हो. So that is about PYQ. So after PYQs are done, then only you should take up test series, practice test, grand test, topic wise test, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट. लास्ट में आप देख सकते हो मॉक टेस्ट. एंड इन दिस रिगार्ड आई से डोंट एवर गो फॉर सॉल्विंग सो मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाय कलेक्टिंग सॉर्ट ऑफ बिग डेटा. कोई बिग डेटा मत बनाइए. दैट विल लीड टू बेसिकली लाइक ओनली कंफ्यूजन एंड इंक्रीज एंजाइटी, डिप्रेशन. तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, स्मार्ट स्टडी, इंटेलिजेंट स्टडी, कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी. Make a selective test series and then work out. Like an academic test series आप लिए है, solve. Maybe if you want one more, you can take it of your choice. So do practice test. But the objective of practice test or test series should be basically to practice time management and also to check your level of preparation, whether it is completed or not. ये important है. ये important है. So here what you have to do basically for practice test, I would say watch the videos or lectures, then go for revision. Check whether
Are there any things which are left over, or are there any mistakes, or are there any concepts which are still need some attention? That is debugging, we say, and repeat it. Right? Start with medium and medium and low level questions or direct questions, and then you can go for tricky questions above gate level. कुछ वैसे आप solve कर सकते हो, लेकिन don't be ambitious. There are some people in the market who are preparing questions with over ambition, or maybe I don't know. So that may lead only to confusion to the students. That is over and above, much above to the level of gate. उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का मोरल कम हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएंगे स्टूडेंट्स. सो डोंट बी ओवर एम्बिशियस. सी टू इट दैट बेसिकली जो गेट के टेस्ट सीरीज है ऑन पार है एटलीस्ट एट दी गेट लेवल और स्लाइटली लोअर देन गेट लेवल, so that you build up the confidence. That is very important. Maintaining confidence is very important during the gate journey. So that is up to that point. If you are getting 40% plus marks initially in the test series, that is a good score. तो आपने क्या करना है, you have to retry, debug and move on. देखिएगा silly mistakes आप जो कर रहे हो, कैसे टाइप के मिस्टेक्स है. Debugging involve that, trying to arrest your mistakes. और बाज वक्त ये कहता हूं मैं, जनरली जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो प्रॉब्लम में, वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर, व्हाट इज दैट मिस्टेक, यू राइट डाउन, सो दैट ड्यूरिंग टाइम ऑफ रिविजन्स यू ट्राई टू पुल योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट मिस्टेक. ये इंपॉर्टेंट है काफी. सो नोट डाउन योर सिली मिस्टेक्स इन द करस्पॉन्डिंग लॉन्ग नोट्स, सो दैट ड्यूरिंग रिविजन you try to pay attention to them in order to make sure that you don't commit those mistakes again in future. ये important है. Then always, you try to see there is always an incremental growth in the subsequent test which you are taking, a subsequent test. Incremental growth. Right? Don't expect too much. अरे भाई मुझे 70% आना था, 75% आना था, 30% आ रहा है, 35% आ रहा है, ऐसा नहीं. We should try for gradual incremental growth. Don't be over ambitious in test series also, and never think that जो आपका परफॉर्मेंस है टेस्ट सीरीज में वैसे ही गेट एग्जाम में होना जरूरी नहीं है. ये बार बार कह रहा हूं. सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ऑन ट्राइंग. सर मुझे नहीं हो रहा है, सर सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं. नहीं, डोंट गिव अप. टॉपिक्स लाइक सिंक्रोनाइजेशन, टॉपिक्स लाइक मल्टी लेवल पेजिंग, इनिशियली पेजिंग का भी कई बच्चों को डिफिकल्टी होती है, मैं देखा हूं. सो डिफिकल्ट टॉपिक जो है, जो इन्वॉल्व टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के, यू पे मोर अटेंशन टू इट. आ जाएगा, जरूर आएगा. Nothing is like impossible. You always give a try. 1 time, 2 time, 3 time, 5 times तक try कर सकते हो आप. Never give up. A time will come. You will definitely gain. You will definitely be victorious. I would always say in the terminology of algorithms that you always should follow divide and conquer and backtracking approach for preparation. Divide and conquer का मतलब यह है, सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट्स हो, divide them into parts. Easy, tough, medium. एक सब्जेक्ट है उसमें इजी, टफ, मीडियम टॉपिक्स. जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, बैक ट्रैक टू द प्रीवियस एंड अगेन ट्राई टू गो, मेक आइटरेशंस लाइक दिस, जरूर समझ में आ जाएगा. देयर इज नथिंग लाइक यू कांट गेट इट. कंसल्ट विथ योर टीचर्स, फैकल्टी. जहां पर जो पर्टिकुलर टॉपिक में आपको मुश्किल हो रही है, फिर से उनसे समझने की कोशिश कीजिएगा. कीप इन टच विथ फैकल्टी हु आर टीचिंग द सब्जेक्ट. दैट विल बेसिकली improve your motivation levels, confidence levels. आप अकेले मोनोटोनस रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई फैकल्टी से ना अपने गुड पीयर से, then you will slightly go in demotivated. वो नहीं होना चाहिए during preparation. ठीक है. So practice test के बारे में ये हो गया है. Then if you are getting less than 40% for example, then what should I do? Less than 40% means basically like you have to rewatch the videos, revise, retake the test, debug where are you making the mistake and move on. ठीक है? Move on. And the basic objective of practice set should be to build your problem solving skills. देखिएगा, are you able to work out the typical questions of GATE? हर एक टॉपिक को गेट के क्वेश्चंस में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस रहेंगे, क्रिटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टफ क्वेश्चंस रहेंगे. आप उसे वर्कआउट करिएगा सो दैट यू इंप्रूव द न्यू स्किल्स, यू गेट न्यू स्किल्स.
right? Fast, when those skills that make you work out the problem faster. And the most important thing which I have been telling every time, do not compare with others. This is very, very important during GATE preparation. कितने सब्जेक्ट्स वो कंप्लीट कर चुका है, कर चुकी है, और मैं कितने करा, कितना कंटेंट मैं पढ़ा हूं, कितना कंटेंट वो पढ़े हैं, कितने परफॉर्मेंस आपका टेस्ट सीरीज में क्या है और उनका क्या है. डोंट गो फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन. डिस्कस कीजिए आप अपने गुड फ्रेंड से. डू नॉट टॉक टू दोस पीपल हु डीमोटिवेट यू, हु डिग्रेड यू. ठीक है? Those who are your well wishers, speak to them, be in touch with them. So don't compare with others. Peer comparison is disastrous. हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. Avoid trivial repetition of solve. जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर चुके हैं फिर से उन्हें बार बार मत सॉल्व कीजिएगा. Be confident. बाद लोगों को होता है कंफ्यूजन. They always remain suspicious. अरे मैं भूल तो नहीं गया, अरे मैं फिर से करूंगा, मैं फिर से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर से एक बार सॉल्व कर लेता हूं. ऐसा मत कीजिएगा. Have confidence. Do meditation to improve your concentration skills, to improve your confidence. ठीक है? So that is also an equally important aspect. रिवीजन के ऊपर बात कर लेंगे थोड़ा. तो रिवीजन कैसे करें? बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिएगा. हाँ, जब आप सब्जेक्ट कोई, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर और एजुकेटर विद एनरोल्ड प्रोग्राम, राइट? So what you can do is you do daily revision. जो क्लास आपकी हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए क्लास इन द इवनिंग 7 to 9, 6 to 8, 9 to 10 जो भी हो, उसके बाद आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा. एंड देन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, बिफोर द नेक्स्ट सेशन you go, you make sure that you revise the previous class. That is very important. That is, I generally, in my terminology, I call it as online revision. That means you are in line with the subject and doing revision. So attend the lecture, make the notes, before going to the next session, revise. This is the best strategy. और फिर उसके बाद जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, then you should go for first revision of all the topics. Then PYQs, along with PYQs, debugging, again revision. So this cycle will continue. Interdependent cycle. So weekly once you plan. Second, monthly revision का अपना प्लान बनाइए सब्जेक्ट का. 2 to 3 months का एक्शन प्लान बनाइए. मतलब 1 month में कितने कौन से सब्जेक्ट्स में रिवाइज करूंगा, 2 to 3 months में क्या सब्जेक्ट मेरे रिवीजन के कंप्लीट होना चाहिए. एंड देन मे बी, सो देयरफॉर दिस साइकिल व्हिच आई सेड शुड कंटिन्यू. रिवाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट. दैट इज चॉइस इज योर्स. So revision and problem solving should continue in horizon, in coercion. रिवाइज करते जाइएगा एंड देन यू टेक अप द टेस्ट आल्सो. एक बात और यहाँ पे करना चाहूंगा. प्रैक्टिस टेस्ट के बाद जनरली मैं जब मेरे सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आई मीन अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम व्हिच आई डू इन माय क्लास, दोज आई कॉल इट एज टिपिकल एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम्स पर टॉपिक जो मैं सॉल्व करूंगा. देन आफ्टर दैट यू शुड टेक अप द लेफ्ट ओवर PYQs. एंड उसके बाद बिफोर टेस्ट सीरीज मेरी अपनी अपील ये रहती है स्टूडेंट्स से कि यू टेक अप सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, बुक चैप्टर एक्सरसाइजेस, जो गेट ओरिएंटेशन के बेसिस पर होंगे क्वेश्चंस. नॉट ऑल क्वेश्चंस, ओनली दोस क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइजेस ऑफ द बुक चैप्टर, स्टैंडर्ड बुक चैप्टर लाइक गैल्विन, टेननबाum, लाइक एल्गोरिथम की बुक अगर हो, कॉर्मन है, टार्डोज है, राइट, एंड तमासिया है, like that. You take up exercise problems which have orientation of question being asked in GATE. Some questions रहेंगे proofs के ऊपर रहेंगे, theory में रहेंगे, आपको वो करने की जरूरत नहीं है. Only those questions which have a potential of being converted to a GATE question, वो question solve कीजिए. Then if at all आपके पास कोई, अगर आपके if you have the access of getting some questions of IIT exams और फॉरेन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको मिलने के कोई स्कोप हो तो वो सॉल्व कीजिएगा, रादर देन टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में अपना दिमाग खपाने से पहले ये बहुत अच्छा है. देन आफ्टर दैट आई वुड से, बिकॉज स्टूडेंट्स इवन इफ आई टेल दे वोंट लिसन, दे विल डेफिनेटली गो फॉर टेस्ट सीरीज, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू दैट. कीजिएगा टेस्ट सीरीज. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू. माय आइडियल रिकमेंडेशन इज, rather than solving subject test, multi test, grand test, etc.,
it is better you take a mock test at the end. That's the ideal one, क्योंकि mock test से आपको time management काफी सीखने को मिलेगा, और अपना सब्जेक्ट लेवल प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ आप टेस्ट कर सकते हो थ्रू मॉक टेस्ट। तो चलिए ये है रिवाइज। सो दिस इज अबाउट रिवीजन। फर्स्ट आइटरेशन ऑफ रिवीजन इज द की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आइटरेशन। सेकेंड आइटरेशन यू शुड अलॉन्ग विथ रिवीजन गो फॉर ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट। थर्ड आइटरेशन 2 to 3 weeks बिफोर एग्जाम, राइट, दैट रिवीजन यू हैव टू बेसिकली कैरी आउट। फोर्थ रिवीजन लॉन्ग टर्म लॉन्ग फॉर्म नोट्स ऑफ योर्स और मे बी आवर्स, मतलब एजुकेटर्स के शॉर्ट नोट्स, मेक वन फॉर ईच रिवीजन। हर एक रिवीजन का एक अपना शॉर्ट नोट्स, मतलब जो चीजें आप शायद लग रहा है आपको आपने भूल गए हो, वो शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा उसको। Revisit the mistakes made earlier, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As I said, in during revision you should look for the mistakes which you made in earlier tests which you have taken. Okay, and then avoid silly mistakes. This is another very very important parameter. Many students end exam में यही करते हैं, silly mistakes करते हैं, and then they lose their ranks, they lose their marks. So avoid silly mistakes. Analyze, mistake analyze करने के बाद note कर दीजिए उसे अपने notes में, so that when you revise again you come back to that, अरे भाई यहां पर मैंने mistake की थी, you can avoid that. Add your silly mistakes analysis to your notes, यही कहा मैंने, add them, that's important, that's important. और एक भी जनरली कहता हूं, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे बहुत डिफिकल्ट है, मैं सही तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप एक और आइडिया मैं दे रहा हूं, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। वो ये कर सकते हो कि एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग सेमाफोर की एक टॉपिक है, आपको लग रहा है कि सेमाफोर में मुझे ग्रिप नहीं मिल रही है, तो आप जितना भी समझे आप इमेजिन कीजिए एक आपके सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आप उन्हें पढ़ाइए, यू ट्राई टू टीच देम, यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दैट। कोई आपका फ्रेंड है, उसे भी बिठा लीजिए और उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा आप, दैट इज ऑल्सो ए गुड टेक्निक, गुड टेक्निक। Then analyzing your mistakes. So in the performance of the test, for example, if you have 60% but if you are not doing analysis, that is not good. If you are 35%, you got 35% and you are carrying a detailed analysis, you are a winner than the person who got 60% and not doing analysis, क्योंकि और confidence आ जाएगा यहाँ पर। So person who is scoring low and doing a detailed analysis and trying to overcome mistake is a winner ultimately at the end. And if you are 80% confident about an answer, then you try to reason out कि भाई मैं 20% मेरी uncertainty क्यों है? What is that? You try to explore and find out, so that in future that uncertainty rate can be brought down. So therefore, the nutshell description is debug, revise, and clarify, and revisit. Debug, revise, and revisit. Then mentorship is again very important. Mentor आपके कौन हो सकते हो? आपके फैकल्टी एजुकेटर हो सकता है। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी सीनियर को बना लीजिए जिसने गेट क्रैक किया हो और अच्छा रैंक लाया हो और उसके पास कुछ टाइम है आपको देने के लिए, मेक हिम एज मेंटर। Educators, if you are enrolled for a program like an academy, for example, then either a senior or maybe you can on daily basis. Mentorship का मतलब नहीं है कि you should have a dedicated letter from him. It could be like, for example, students can on regular basis, like when we take some doubt clearing sessions, or when we take some special class, special free class on an academy, where we put the heading like ask me anything, you participate in that, you speak to the faculty. I find many a times that an academy provides a very good option of speaking to faculty, but many people hesitate to speak. Inertia hai ye. You have to come out of that, be very bold and confident and speak to faculty. Sir, ये problem है, कैसे हो? Don't feel shy. अरे वो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, faculty क्या सोचेंगे? नहीं. Be confident and boldly you ask the questions. Develop that skill of speaking. अगर आप यहाँ speak नहीं करोगे तो फिर आप प्लेसमेंट के इंटरव्यूज राउंड, एचआर राउंड्स, ग्रुप डिस्कशन में कैसे करोगे? ऑल ऑफ ए सडन आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो दैट्स अ प्लेटफॉर्म, यू शुड टॉक टू द फैकल्टी, यू शुड स्पीक टू द फैकल्टी, मेक योर फैकल्टी एज अ मेंटर, रेगुलर बेसिस में बी इन टच, डाउट क्लियरिंग सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरैक्ट विथ हिम, क्लैरिफाई योर डाउट्स, यू फील लॉट ऑफ बेटर कॉन्फिडेंस, यू फील वेल, अच्छा लगेगा आपको बात करके। ओके, so keep note of your doubts and clarify them from time to time. As I said just now, share your test result and consult areas you need to improve with your mentor. पूछिए आप,
सर यहाँ पर मुझे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू? he will share his experience, he will guide you, mentor will guide you. So mentorship is a very important component during your preparation. So boys and girls, this is what I have a small presentation with regard to what I say do's and don'ts for GATE preparation. So those students who have enrolled for an academic program, I would say that's what the purpose of that channel, which I said earlier, is basically for like mentorship only. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई फैकल्टी को कोई बहुत ज़्यादा ग्रेव प्रॉब्लम है, आप फैकल्टी से पूछ सकते हो, सर कैन आई स्पीक टू यू? फैकल्टी विल गिव द टाइम, आप बात करिए उनसे, seek clarifications, try to overcome your inertia, come out of that shell and be bold enough to face and clarify your doubts, right? So unless, so GATE journey is a lifeline, I would say, that's what it provides, a lifeline to the engineering students. It is going to imbibe or provide you lifetime skills. आप कई चीजें लर्न करोगे इसमें. That's why GATE preparation is very important. You get an opportunity to speak to your faculty, you get an opportunity to overcome your communication skills, improve your communication skills. आपका जो फोबिया है, आपका जो इनर्शिया है, आप वो बाहर आ जाओगे इससे. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारे मैथमेटिकल स्किल्स, ये सारे स्किल्स आपके डेवलप होंगे विथ योर GATE जर्नी. So that's why I always recommend the students to prepare, go for GATE journey, indulge yourself in GATE journey for a better, superior personality, because आजकल जो market है, it's a very competitive market. So unless and until you have the requisite skills, right, soft skills है, interpersonal skills है, unless you imbibe them, you won't become a successful engineer. So अपने better career development के लिए GATE journey is very important. So that's why I have prepared a video, you can check it. Role of GATE exam in career building of CSIT students. Role of GATE exam. GATE exam play a very important role in the overall development of a engineering student, whether it is computer science or non-computer science, anybody. So that's what I have in today's session, right? So hope to meet you with such generic sessions, motivational sessions in the coming videos. Thank you so much.